हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर सिद्धार्थ सुराना। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड और मैं तो हमेशा मस्ती रहता हूं। वी आर नाउ गोइंग टू स्पीक आउट लाउडली अ सेंटेंस which we haven't spoken since a long time. Income tax is payable. Do you know person का meaning? Previous year assessment year. Do we know how to calculate net taxable total income? 5 heads clubbing set of deduction. Finally we get our NTTI, and now that NTTI is calculated, the last part of that sentence is where we are going to go today. Now we are going to learn tax rates applicable for the assessment year 23-24. When I started your syllabus, at that time I told you okay, tax rates are not given in the Income Tax Act. They come every year in the Budget Finance Act. The budget has got 2 contributions in your syllabus. 1, tax rates. 2, amendments. Amendment chapter by chapter. Tax rates at one place. If AY is 23-24, that means PY is, and therefore the lectures that we are doing will be applicable for students of May 23 as well as November 2023 ka exam. God forbid, touch wood. But in case there is any November 23 student also watching these lectures, so these lectures are applicable to you also. And class वाले तो सब exemption in May 23, टेंशन ही नहीं है. Once you get an exemption, तो 3 attempts तक you can take that exemption. हूँ क्या एक देगा खींच के, sir I will clear both groups in first attempt with rank. तो May 23, November 23 के लिए these are the dates. The tax rates in our income tax law are given assessee by assessee. There are 7 assessees. In the definition of assessee, there are 7 persons. Who are they? Individual, HUF, company, firm including LLP. There is only one place where they are different. LLP को presumptive नहीं मिलता. AOP, BOI, local authority and artificial juridical person. Assessee by assessee tax rates are given. Now that we know how to calculate income, उस income पे how to calculate tax, सबसे पहले we will do with the for the first assessee. वैसे CA इंटर की एग्जाम expects you to know only tax calculation of individual HUF, but firm company भी फट at least writing part we will do. Individual के लिए our income tax law has given something called slab rates. Income tax in our country will be levied on the basis of slabs. सर मतलब find out your total income. मित्रों 2 महीना हो गया टोटल इनकम करते करते. Take an example. What is your total income? 20. बोलने को you could have said 20 करो, but ठीक है 20 lakh rupees. We have to therefore calculate tax on 20 lakh क्योंकि income tax is payable on the net tax. So we have to apply a particular percentage on this. Tax will be a part of income, no? तो इंडिया में इनकम टैक्स इज नॉट 1, 2, 5, 10, 20% ऑफ दिस डायरेक्टली. नहीं, अवर टोटल इनकम विल बी डिवाइडेड इन सिंपल भाषा में स्मॉल पार्ट्स, लीगल भाषा में स्लैब्स. टोटल 20 में से फर्स्ट दिस मच, नेक्स्ट दिस मच, नेक्स्ट दिस मच, बैलेंस, ऐसे करके स्लैब्स आर डिवाइडेड. Little amount in this will come, little amount in this, little in this, and little in this. ऐसे slab rates are given. And in other words, you can say that our income tax rates are basically progressive rates. As and when your income will increase, your tax liability in rupees तो obviously increase रे बाबा. एक बात बताओ, if we keep one constant rate of income tax 1%, तो भी as and when income will increase, directly proportional, no? That's not the correct statement of defining slab rates. जैसे जैसे income बढ़ेगा tax will increase is incorrect. That will happen with fixed rate also. Mark the words. As and when your income will increase, your tax rate on that amount will also increase. Not just the liability in rupees, but the rate of calculation will also increase. That is called slab
rate system. Is that understood? For the purpose of calculating tax on the basis of slabs, we are dividing income into 3 parts or 4 parts, whatever are the number of parts. Assessees are divided in, individual assessees are divided in the following 3 categories. Category A, category B, category C. इंडिविजुअल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया. इंडिविजुअल मीन नेचुरल पर्सन, ह्यूमन बीइंग, उसका टैक्स रेट्स वी आर लर्निंग, अस्यूमिंग इनकम इज कैलकुलेटेड. 3 कैटेगरी में इंडिविजुअल विल बी डिवाइडेड. कैटेगरी ए, नॉर्मल इंडिविजुअल, which does not mean that B and C में abnormal people will come. Category A basically means anyone which does not go in B or C. B and C are specifically defined. If you don't go in B or C, you fall in A. Okay. So there is a certain tax calculation given for these categories. Okay. So we need to first know who falls in category B and C. Please understand. In our country, once a person becomes senior citizen, we want to give them respect, इज्जत. रिमेंबर गुड्डू भैया once said, हमारी मम्मी को चाहिए फुल इज्जत. ये पंडिताइन क्या होता है बे? नहीं, इट्स ओके. गुड्डू भैया नो आइडिया ना. जिस दिन यू विल गिव मी अ लिस्ट ऑफ लेक्चर्स नो डेट वाइज, उस मैसेज में लिख देना सर वो गुड्डू भैया का क्या बता रहे थे, उसका भी लिंक भेज दो ना. आई सेंड दैट ऑल्सो. लेक्चर आपका ये मिस्ड, ये मिस्ड, ये मिस्ड, इसका लिंक, एंड नीचे sundry videos to watch for understanding concepts better. So basically once you are a senior citizen, we will give you respect. Respect मतलब we will take from you lesser tax than non-senior citizen. इसलिए senior citizen is put in a separate category. Senior citizen will fall in this. Now we are getting a little idea about category A. Someone who is not a senior citizen will come here. But what's the question? Sir, what do you mean by senior? When does one become senior citizen? Any person who is of the age 60 years and above. If you are exact 60 up to 79 ke 80, 60 to 79 will come. We will take from them lesser tax. Or may I put it this way, that 0 to 59 years therefore will come here. क्योंकि exact 60 मतलब category B. Correct है? And we also have something called a very or a super senior citizen. Guess करो age. More than 80. Wrong. 80 years and up. मतलब the categories are 0 to 59, 60 to 79, 80 and above. Now we come to know what is normal individual. What is category है बताओ? Any individual of the age 0 to 59 years, any individual less than 60 years. Exact 60 category B, exact 80 category C. We will take from them lesser tax than category A, and from them lesser tax than category B. That means can I say lowest tax, middle tax, highest tax? जैसे जैसे your age will increase, इज्जत will increase, tax will decrease. That will be established in the rates, but उसके लिए category should be clear. So individuals finally are getting divided in 3 categories: 0 to 59, 60 to 79, 80 and above. As and when your age increases, your tax liability will keep on reducing. Is that clear? How many students before today also were aware कि हाँ सर 3 category होता है? How? Did I? मतलब I said उसकी वजह से ही हो रहा. अच्छा, तो वैसे तो मैंने 44A भी तो पढ़ाया भी था. हाँ, किधर लिखा था? मॉड्यूल. Now let me tell you, half knowledge is worse than no knowledge. समझा? तो 2 things about this, 3 things है. Third one is more important for finals here, but 2 things which will be affecting your sums also. As and when a person का age grows, full इज्जत, full इज्जत, full इज्जत, but only हमारा senior.
मतलब this benefit, if you want, it has to be a resident. It has to be a resident. The category is not 60 and 80. The category is resident 60, resident 80. And इसके लिए we have a full chapter. Resident, non-resident. समझा? तो मेरी बात सुनो. If you understand this, that means you have understood what I am trying to say. Non-resident 100 years. Category A. क्योंकि कैटेगरी बी एंड सी में द रिडक्शन ऑफ टैक्स का फैसिलिटी विल बी अवेलेबल ओनली इफ यू आर रेसिडेंट 60. आप समझा क्या? एवरीवन एंड रेसिडेंट 80 years ओनली इफ यू आर रेसिडेंट. इज दैट क्लियर? इंस्टीट्यूट विल प्ले विथ यू बाय आस्किंग यू क्वेश्चन ऑन नॉन रेसिडेंट 100 years. तो सुपर सीनियर का रेट लगेगा कि नहीं? एंड नॉन रेसिडेंट 75 years तो सीनियर सिटीजन. They will all go in category A, like you and me. Anybody out here is senior? माइनर चाइल्ड को पूछता है सीनियर सिटीजन. हम क्लबिंग वाला लोग हैं, हम टैक्स वाला लोग भी नहीं, बराबर के नहीं? कितना टाइम बाकी है तेरा? हाँ 22 December. हाँ याद है, करेक्ट. लेस देन अ मंथ नाउ. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ऑल द पान वाला शॉप्स 18 वयापेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तीला तंबाखू उत्पादन विकणे कायद्याने दंडनीय अपराध आहे. यू आर फ्री फ्रॉम ऑल दैट. नो, He's like, sir, more freedom, थोड़ा साल और लगेगा. Point is this, that we all fall in category A. Non-residents will all come with us irrespective of their age. Is that clear? ये एक चीज है which is a trick and a lot of students go wrong here. But are we clear? Second, सबका birthday will come on 1st April only. नहीं, साल के बीच में आ सकता है. It is possible that your birthday is coming on 22nd December. Year कौन सा आएगा? 2004? 2004. मतलब can I say in the year 2064 he will become senior citizen? अरे 2004 plus 60 रे. अरे हाँ ना बाबा, पर ईयर तो मैं ईयर बोला, पागल है क्या थोड़ा सा? ईयर बोला ना. 2064 में he will become senior citizen. और तो रोज रोज नहीं बनेगा. बनेगा तो बर्थडे के दिन ही बनेगा ना. रोज रोज बनता है क्या? तेरा केक कटिंग रोज होता है? ऑन हिज बर्थडे इन, सॉरी भाई सॉरी, ऑन हिज बर्थडे इन 2064 ही विल बिकम सीनियर सिटीजन. हैप्पी? मेरा क्वेश्चन क्या है? ईशान सुन, प्रीवियस ईयर 64 65, हाफ ईयर नहीं, पार्ट ऑफ ईयर. हाफ होता तो सितंबर, ठीक है. 22nd December को यू आर बिकमिंग 60 years old. ठीक है. मतलब क्या नहीं से for this period you were 59, for this period you were, and that will happen one day with all of us at the time of 60 and at the time of 80, both occasions. देखो, last year non senior citizen category A, next year senior citizen category B. अच्छा, same explanation is applicable for 80 years वाला guys also. एक जगह पे explaining using for both, क्योंकि this and this I am jointly explaining. But the question is about this year. थोड़ा टाइम नॉन सीनियर, थोड़ा टाइम सीनियर, तो दिस ईयर का इनकम वी विल डू प्रोपोर्शनल. This is where you will get your answer, that whether 60 or 80, it can be at any time during the previous year. So you are senior citizen. मतलब इजी बना के समझाता हूं. He will become senior citizen somewhere in the middle of 64 65. For the full previous year you are senior citizen. Your birthday falls in December, Jan, Feb, March, 31st March. Your time of birth is 11:59 p.m. You were senior citizen for 1 minute. But for the full year, at any time, मतलब 1 minute के लिए भी you were senior citizen. No, so that full year you will be treated as. Okay, tax is calculated in the. उस दिन यू आर सीनियर सिटीजन. आप समझा? तो द ईयर इन विच यू टर्न 60 और 80, बेटा बर्थडे के दिन ही होता है. द ईयर इन विच यू टर्न 60 और 80, दैट फुल फाइनेंशियल ईयर you will be treated as senior or very senior. Explanation is for both.
आई हैव नॉट क्लोज द ब्रैकेट. तुमने किया तो तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं. सपोजिंगली माई बर्थडे इज ऑन 1st April. So can I say full year 59? First day of the next year I am becoming 60. Next year तो 1st April से I am 60, तो उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है. लेकिन there is an organization called Central Board of Direct Taxes, CBDT. In final CA you will be taught this is income tax के पिताजी. Income tax के बाप का नाम CBDT. CBDT is the father, dad, pops, abba, achan of income tax department. Anything CBDT says, every income tax officer from top to bottom, from the senior most chief commissioner to the junior most inspector, everyone has to comply with every instruction of CBDT. Once the father says something, the children have to listen. You don't say, sir, no, in our generation it is the other way around. Income tax is 1961 ka generation, and in that generation children used to listen to their parents. मैंने बोला है ना पहले भी, CBDT came up with a circular and said, anyone turning senior citizen or 80, दोनों के लिए applicable है, on the first day of the assessment year also for that full year will be treated as senior citizen. मतलब सुनो, ये आपका previous year, okay? Full year you were 59 किया 79, दोनों के लिए. Next year is your assessment year. उसके 1st April को you are becoming 60 और तो this full year तो you did not touch. Still you will get the benefit of B or C if resident. वो पहला requirement है, if resident. Logic क्या है? देखो, you are born on 1st April. इनका logic समझो. Born on 1st April. Okay? तो 30 April को you've completed 1 month. 1st May को new month has started. तो next year 1st April, next year ना जो 1st April है ना, you have completed 1 year and the second year has started. Birthday 1st है, लेकिन beginning of second year है. We have completed 75 years of independence, but it was the 76th Independence Day. क्योंकि 47 में पहला काउंट किया, तो 48 वाला सेकंड हो जाएगा. Completed year 75. हम अच्छा, अब मारवाड़ी हाउस होल्ड में तो ऐसा होता है, तेरे को 33 पूरा होके 34 लगा के 34 पूरा होके 35 लगा. क्या कंप्लीट एंड क्या लगा, दैट इज बोथ टुगेदर डिस्कस्ड. What started is also discussed. So their philosophy is this. 1st April को your birthday. So 31st March को 1 year completed. So on 1st April तो your second year has started. You are already in the second year. So if your birthday is on 1st April, तो सुनो, on 31st March 60 complete हो गया. 1st April को तो 61st या 81st has started. In other words, your birthday falls on 1st April of assessment year also, no? तो फुल ईयर के लिए यू विल बी ट्रीटेड एज सीनियर एंड वेरी सीनियर. मतलब रेसिडेंट 60 to 79, रेसिडेंट 80 एंड अबव, दिस 60 और 80 कैन बी टच्ड, नॉट क्रॉस्ड. टच, क्रॉस इज नॉट नेसेसरी. टच व्हेन फुल ईयर और फर्स्ट डे ऑफ EY, फुल ईयर और फर्स्ट डे ऑफ बोलो, फुल ईयर और फुल ईयर और देन ऑल्सो फॉर द फुल ईयर यू विल बी ट्रीटेड एज सीनियर सिटीजन एंड वेरी सीनियर. इज दैट अंडरस्टूड? These are the 3 categories. ये वाला जो पार्ट था ना 1st April of assessment year, this is more important for final. ये वाला पार्ट, most importantly ये वाला पार्ट, that lower tax का facility will be given only if resident. Non-resident senior citizen will fall in category A. Is that clear? And now, what are the slabs? Category by category. First, let's talk about category A. Your first 2,50,000 की इनकम के ऊपर we will apply 0% tax, which means this is known as something called the basic exemption limit. Sir, what is the meaning of basic exemption? Basic exemption is that limit up to which income, ये जो 250 की इनकम है ना, it is NTTI. We are calculating on NTTI. तो first 250 of your NTTI no tax. मतलब सुनो, supposingly I continue that 20 lakh का एग्जाम्पल. 20 lakh is getting over here. यहां से 0 स्टार्टिंग, तो फ्रॉम 0 अप टू फर्स्ट 2.5, 20 lakh का फर्स्ट 2.5 will be taxable at 0%. And that means what will be the tax in this bracket? 0 rupees. That is why it is called basic exemption limit. अब समझो लॉजिक for those who know slabs also, that income tax says that higher your income,
हायर योर लायबिलिटी इन रुपीज नहीं, हायर योर लायबिलिटी इन परसेंटेज. इफ यू आर अर्निंग 250 इन अ ईयर, मतलब रफली यू आर जस्ट मेकिंग 20,000 अ मंथ, तो क्या देश चलाएगा बे? हम चला लेगा, तू घर चला. डोंट पे टैक्स. लॉजिक ये है, डोंट पे टैक्स. बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ 2,50,000 rupees तक no one is supposed to pay any tax, and that is why we call it basic exemption. No matter who you are, whether you are a CA article professor or you are Mukesh Bhai, the owner of India, first 2,50,000 will not be taxable even for Mukesh Bhai, the individual Mukesh Bhai. Reliance Industries Limited is not coming here. The individual Mukesh Bhai. You must be thinking, sir, मुकेश भाई को 2.5 लाख पे क्या फर्क पड़ता होगा? उतना तो मस्ट बी पॉकेट मनी ऑफ आकाश. पर मिनट के पर सेकेंड? हाँ, पता नहीं सर, होगा. इनफ ऑफ अंबानी जोक्स. नहीं, ओके. मम्मी ने बोला ना किसी का मजाक नहीं उड़ाने का. वन डे गॉड विल मेक यू लाइक दैट. दैट इज व्हाई आई मेक फन ऑफ मुकेश भाई. वन डे गॉड विल मेक मी लाइक दैट. ठीक है. तो फर्स्ट 2,50,000, नो मैटर हु यू आर, नो नीड टू पे एनी टैक्स. But the moment you cross 2.50 and you reach up to 5 lakh, that means can I say the next 250 of your income? एक बात बताओ, between 250 and 5 lakh, how much is the income? उसके ऊपर you pay tax at 5%. 5%. Have you crossed 20,000 per month आराम से? तो little contribute. And only little we are asking कितना? 5%. As low as 5%. Supposingly there is a person whose income is 4 lakh. Now let me see whether you are understanding what are slabs. Supposingly there is a person who is earning 4 lakh. Is 5% bracket going to apply to that person? Yes. So do 4 lakh ka 5%. No. First 250 will always go in. बचा हुआ बैलेंस will go in 5. तो 1.5 का 5%, 7. ये ठीक है, ये सब सम्स करना ही करना है. ओके, यू डू इट ऑन योर कैलकुलेटर, नो नीड टू राइट. वी आर गोइंग टू सॉल्व प्लेंटी ऑफ सम्स ऑन दिस. आई नीड यू टू अंडरस्टैंड द स्लैब्स. नाउ यू हैव क्रॉस्ड 5 लाख, मतलब यू हैव क्रॉस्ड मंथली इनकम ऑफ ऑलमोस्ट 40-50,000 रुपीज. 40,000 तो क्रॉस हो गया ना 480 पे. तो यू नीड टू कॉन्ट्रीब्यूट मोर. द नेक्स्ट 5 lakh rupees of your profit, 5 lakh से next 5 lakh will end where? That means can I say from year to year 5 lakh to 10 lakh? The next कितना? 5 lakh. इस पे we will take tax from you at 20%. मतलब now I am going to ask you that in 5% bracket how much is the liability in rupees? वो तो ब्रैकेट है, उसमें टैक्स कितना कैलकुलेट होता है? तो टैक्स लायबिलिटी इन रुपीज विल बी हाउ मच? 12,000. If you are understanding that, what is the value of the next bracket of income? 5 lakhs. On that income we are going to apply rate of, मतलब what will be the tax liability of someone who earns between 5 lakh and 10 lakh? 1 lakh. But then 0 से लगाकर 10 lakh का total will become 1,12,500. ये समझा? क्योंकि 0 rupees from here, 12,500 from here. कैसे आया? The bracket का amount into the percentage. The bracket का amount into percentage. तो here we get what? 1 lakh. Is that clear? मेरा question कुछ और है. Supposingly there is a person who has earned 8 lakh rupees. Is 20% applicable? तो 8 का 20 ना. First 250 everybody 0%. Next 250 बैलेंस जो बचा ना 3 lakh पे 20%. करेक्ट और नो? अमाउंट से फिलहाल मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट. एंड वंस यू क्रॉस 10 lakh एनी बैलेंस, नाउ इन योर केस इट इज 20. इसका 20 lakhs है, मेरा 20 करोड़ है, आपका 200 करोड़ है, आपका 2,000 करोड़ है. आफ्टर 10 lakh वॉट एवर इज द बैलेंस, देखो वन ओपन बैलेंस वी विल हैव टू कीप ना. हम लोग बोल रहे हैं नेक्स्ट ब्रैकेट समवेयर इट हैज टू बी एन ओपन ब्रैकेट नो, which can consume infinite amount of income. तो anything after 10 lakh. अपने एग्जांपल में बाय द वे वो after 10 lakh कितना बचता है? If we are ending here 10 to 20, that means how much is the income in the bracket? और इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे 30%. तो we will sing together 1 2 3 start. 0 5 20 30. 0 5 20 30. Join me. 0 5
लाउडर. फर्स्ट 2,50,000. नेक्स्ट 250 मतलब 250 to 5 lakhs. नेक्स्ट 5 lakhs मतलब 5 lakhs to 10 lakhs. एंड बैलेंस अप टू इंफिनिटी. अपने एग्जांपल में 20, इट कैन बी एनी अदर अमाउंट. बट ये 20 लाख का, उसके लिए यू नीड टू कंप्यूट द इनकम फर्स्ट. पूरी लाइफ हाउ वी यूज टू टीच स्टूडेंट्स, अज्यूम करो इनकम इज कैलकुलेटेड, क्योंकि 2 महीना लगेगा सिखाने में, तो पहले अज्यूम करो. एंड वी यूज टू लर्न टैक्स रेट्स. बट नाउ इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ न्यू रेजिम. दो देयर इज ऑलवेज एन आइडिया कि स्टूडेंट्स को ये रेट सिखा दो एंड जस्ट एट द एंड टेल देम कि न्यू रेजिम में देयर इज एन ऑप्शन टू पे टैक्स एट डिफरेंट रेट्स, बट वो बाद में करेंगे आफ्टर इनकम. तो ओल्ड रेजिम in the first chapter and new regime in the 12th chapter, I found that a little less comfortable, क्योंकि by that time students will forget these slabs. I want students to compare these slabs and new slabs. मेरे हिसाब से तो I should do it together only. Is that clear? अब ना अगर clear है तो now I am giving you an example net taxable total income which is different from ईशान का example. 12 लाख. You want to do 15 लाख मोदी जी? तो ठीक है, मोदी जी करो. Please help me with the tax. First 2,50,000 पे 0%, तो अमाउंट क्या मिला? 0. वेरी गुड. पूरा बोल के गिव मी द आंसर. नेक्स्ट 2,50,000 पे 5%. वेरी गुड. नेक्स्ट 5 लाख पे तो यू गेट, एंड बैलेंस कैन चेंज फ्रॉम असेसी टू असेसी. इन दिस केस, ईशान के केस में 10 लाख था, दिस केस इट इज 5 lakhs. तो यू विल अप्लाई 1,50,000 और ये जो टोटल होगा दैट्स योर टैक्स, मतलब 2,72,500. इज दैट अंडरस्टूड? 62 है. आई वाज चेकिंग इफ यू आर पेइंग अटेंशन. 2,62,500. सुनो, डिड यू नोटिस दैट ईशान का 20 lakhs और मेरा 15 lakhs, नहीं मोदी जी का 15 lakhs, मेरा 12 lakhs. वॉट एवर यू डू, दिस 1,12,500 is fixed. Not at inter, but at final. Students calculate tax how? मैं बताता हूं. And you have to do it like that in exam also. if तुम ये सब करेगा ना तो people will laugh at you. How they do? आप ट्राई करोगे? 5 lakh पे 30% प्लस 1,12,500. Very easily you understood. Thank you. वर्ड्स में ऐसे होता है, एक्सेस ओवर 10 लाख पे 30% प्लस 1,12,500. 5 लाख वॉज ऑल्सो एग्जाम्पल. इसमें 10 लाख था, इसमें 5 लाख है, समवेयर इट वॉज 2 लाख. एक्सेस ओवर 10 लाख पे 30%, मतलब टेक टोटल इनकम ऑन कैलकुलेटर. प्रोसेस भी समझो. टेक टोटल इनकम ऑन कैलकुलेटर, सब्ट्रैक्ट 10 lakh, multiply by 30% plus. That's how we do tax calculation in CA final. Inter में if you are more comfortable with this, चलेगा. 2-3 sum starting के तो we will do like this only. If then after a point you say कि सर मेरे को in गुज्जू, typical गुज्जू, सर now मेरे को फाता है, I am comfortable, so we will do it that way also. वो जो advanced way of doing it, आंसर वही रहने वाला है. Okay. Now that we are done with the slabs of the first category, let's go and learn slabs of the second category. Senior citizen, but only if resident. And this 60 you can touch ke cross. When? Full previous year mein anytime. First day of the assessment. So what will be the change in our country? Senior citizen बनने का क्या फायदा? Your basic exemption will change from 2,50,000 to 3 lakh rupees. मतलब फर्स्ट 250 मैथ समझो, आई कैन डायरेक्टली गिव यू ये स्लैब्स है, और स्लैब्स लेके मैकेनिकल कैलकुलेशन कराना होगा ना, इसका कितना, इसका कितना, इसका कितना, मेक यू लर्न ऑल्सो दैट लास्ट अमाउंट. लेकिन आई नीड टू शो यू सम अरिथमेटिक हियर. फर्स्ट 250 कैटेगरी ए एंड बी बोथ पे एट 0%. कैटेगरी बी में जाने का बेनिफिट इज द नेक्स्ट 50,000. दैट मीन्स 250 से लगाकर 3 लाख तक का जो गैप है, that gap is of what rupees? 50,000. In category A, that amount goes in which bracket? 5%. But in category B, we are removing it from 5% and putting it in
0%. So the savings is going to be that 50,000 का 5% only. And therefore, that is how much amount? चेक करना है ना, तो you'll find out कि लास्ट में ना इन दोनों के डिफरेंस में टैक्स लायबिलिटी में it is only going to be 2,500. क्योंकि the rest of it is same. 3 lakh to 5 lakh, 5%. 5 lakh to 10 lakh. कहना इसे ये तो ब्रैकेट ही पूरा सेम है, 20%. And excess over 10 lakh. मतलब इफ आई कम बैक टू ईशान वाला एग्जांपल, तो ये जो 0% था ना, दैट चेंजेस फ्रॉम 250 to 3 lakh. मतलब फ्रॉम ईयर वी आर रिमूविंग 50,000 एंड पुटिंग ईयर. मतलब इन कैटेगरी ए जो 50,000 5% पे जा रहा था, इन कैटेगरी बी इट इज गोइंग टू 0. मेरी बात सुनो, 0 to 250 सेम एट बोथ प्लेसेस. 5 लाख से लगाकर इंफिनिटी सेम एट बोथ प्लेसेस. इनफैक्ट 3 लाख से लगाकर इंफिनिटी सेम. डिफरेंस इज ओनली 250 to 3 लाख का डिफरेंस, 5%. एंड अभी मैजिक देखना है तो देख लेते हैं. लेट्स टेक द सेम एग्जांपल ऑफ मोदी जी. नेट टैक्सेबल टोटल इनकम 15 लाख रुपए. कोई कोई शाना इधर से 2,500 माइनस करके आंसर दे रहा, बराबर ना? हाँ, बट स्टार्ट से करो. फर्स्ट हाउ मच यू विल पुट इन 0%. तो 3 लाख इंटू 0%. अब जो पूछ रहा है उसका आंसर दो. द इनकम इन द नेक्स्ट ब्रैकेट 2 lakhs. टैक्स एट रेट ऑफ, तो टैक्स लायबिलिटी ऑफ दिस ब्रैकेट. द इनकम इन द नेक्स्ट ब्रैकेट टैक्स एट रेट ऑफ, तो उसका. एंड बैलेंस इनकम टैक्स एट, दैट कम्स टू. नाउ यू गेट. मेरी बात सुनो, सुनो. दिस वॉज सेम, दिस वॉज सेम, दिस वॉज सेम. डिफरेंस इज ओनली ईयर. 250 का 5% की जगह पे वी आर डूइंग 2 लाख का 5%. तो 50 का 5% वी आर सेविंग एंड दैट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड 50,000 का 5%. एंड देन वेदर इट इज ईशान का 20 lakhs, whether it is this example का 15 or 12 lakh, understand please these three figures will remain same. यहां से यहां पे changes 12,500 का 10,000, otherwise these three will remain same. You know how final CA का students do it. Try करो orally. 15 lakh का example से you try, words में I will tell you. मतलब -10 किया तो क्या बचा? 5 lakh, 30%. जस्ट लाइक यहां पे 1,12,500 इज फिक्स, यहां पे 1,10,000 इज फिक्स. समझे? आई स्पीक इन वर्ड्स. एक्सेस ओवर 10 लाख का 30% प्लस 1,10,000. वॉट एवर बी द इनकम, 20 lakhs, 15 lakhs, 12 lakhs, जो भी है माइनस करो 10 lakhs एंड टैक्स इट एट 30 एंड एड. इफ दिस इज द एसएससी तो 1,12,500 and if this is the assessee तो 1,10,000. That's the difference. एक टाइम था where in this also gents and ladies was different rate. क्या यही है आपकी इक्वालिटी? That MP no from Ladakh, उसका भी एक मीम बना है. उसने ही तो पार्लियामेंट में दिस हिस्टोरिक स्पीच हियर गिवन. एवरीवन वाज, लोगों को लगता था पीपल फ्रॉम कश्मीर कैन नॉट टॉक, पीपल फ्रॉम लद्दाख आर वेरी हैप्पी गो लकी, सिंपल, दे डोंट नो हाउ टू टॉक. व्हाट अ स्पीच दैट गाय गेव. एवरीवन वाज फ्लैट एंड उनका वो एक लाइन मीम बन गया. क्या यही है आपकी इक्वालिटी? ऑल द महिला मोर्चा गाइज, ऑल दैट जेंडर, वो all the feminists suddenly disappeared. But since the day they were merged into one, every budget में you'll see this rumor. तो महिलाओं के लिए कुछ अलग आयकर की दरें आई. चल काय का अलग, इक्वालिटी इक्वालिटी और अलग आयकर, काय का अलग, नॉनसेंस. तो इन इंडिया बेसिकली व्हाट इज द इज्जत ऑफ बीइंग अ सीनियर सिटीजन? 2500 रुपए. What is the value of respect of senior citizen in our country? 2,500 rupees. नहीं, वो तो ये भी देगा ना. So that is the same, no difference is तो 2,500.
इनफैक्ट सीए विल टेक फ्रॉम हिम लेस. सीए सोचेगा एक काम करता हूं 500 मैं कम लेता हूं, बेचारे को कुछ तो बेनिफिट. यू अंडरस्टूड? तो इन इंडिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ सीनियर सिटीजन? 2005. हाँ, आज ट्वीट करेगा मस्त. गुड आइडिया आई गॉट. एंड देन नाउ वी गो टू द थर्ड कैटेगरी, रेसिडेंट. इक्वल टू 80 के ग्रेटर देन 80. When? Any time during the year or 1st April of the assessment. Correct है? Little more senior, तो little more इज्जत. तो for them, for up to income of rupees 5 lakh, we will not take any tax. Basic exemption will increase from 250 to 3 lakh for category B and from 3 lakh to 5 lakh for category C. मतलब this part goes away in 0%. Why did I make this line? Why was it necessary? Because we are used to singing songs. 0, 5, 10. वो बच्चा क्या करता है? 0 to 5 lakh 0%. They know that next bracket is 5 lakh to 10 lakh. तो वो 5% लगाता है. Then they take more than 10 lakh. तो बोलता है 20. फिर बोलता है अच्छा सर मतलब 80 years वाले को there is no 30% category. No. 80 years वाले को there is no 5% category. क्योंकि 5% category has gone away inside the basic exemption itself. When you start paying at 30. मतलब first 5 lakhs will go in 0. Next 5 lakhs will go in 20. And anything after that first 10 lakh will go in 30. इतना सिंपल है. If you compare from these guys, it will be difference of. एक तो क्या है, कोई कोई बच्चे को पहले ये डाउट आता है कि सर these guys are getting 5%. They are not getting 5%. Super senior को you are not giving only 5%, sir. So unfair. Directly you are taking at 20, sir. Where others are paying at 5, they are not paying anything. Ultimately, the others का tax in 5% is their savings. एक बात बताओ, how much was their tax in 5%? And how much was their tax in 5% bracket? Which is precisely the difference. And that amount will go away from here. And इसलिए if you compare with this, so the difference will be 12,500. If you compare with this, so the difference will be, क्योंकि इन दोनों का तो 2,500 भी already know. और अगर देखना है, तो फिर एक बार we will tally it also and check by taking the same example of NTTI of Modi ji. Just answer what I am asking. How much income will go in basic exemption? 5 lakh taxable at what percentage? That means 0 tax. Next bracket mein income is how much? Taxable at? So tax is? And then balance to infinite tak it can. Balance can change. But this remains fixed. इसका भी we will do some arithmetic बाद में. पहले इसको conclude करते हैं. In our example, how much is the balance? उसका 30%, 150. So tax. Do you observe? 2 lakh. If we check from here, we have 10,000 का difference. If we check from here, we have 12,500 का difference. इन दोनों का तो 2,500 we have already tallied. और सुनो, ये जो difference है ना, that's nothing but the 5% bracket का tax for category A and B. Is that understood? 5% पे they have tax of 12,500. They have tax of 10,000. They don't have any tax. वही difference है. And आज के बाद how we will do? ये आप बता दो. Words में this time. सबसे पहले what will you do? 10 lakh. What will you apply on that? 30%. That's your 30% bracket for everyone. Whoever is the assessee, subtract 10 lakh and apply 30%. Subtract 10 lakh, apply 30. So that's your 30% bracket. Plus the fixed amount of tax. And 10 lakh ka income. For the first category is 1,12,500. For the second category is. And for the third category. Is that understood? So this is how slab rates are calculated in our country. This is how we can calculate the tax of any assessee. Any assessee ka tax is going to be calculated like this. Take the total income, apply the slab.
0, 5, 20, 30, 0, 5, 20, 30, 0, 20, 30. Is that clear? It may take some time because you all are new to this, लेकिन once upon a time आपका एक time आएगा जो you will be comfortable with the slabs that are given here. We will be doing a lot of sums. You will get an idea about how to calculate tax, but there is bad news. We can't solve sums right now. Second regime तो बहुत बाद में आएगा, बहुत बाद में आएगा ब्रो. सेकेंड रेजिम से तो वी आर फार फार अवे टिल नाउ. सबसे पहले तो लेट मी टेल यू, दिस टैक्स और दिस टैक्स इज, कैन आई से द टैक्स अकॉर्डिंग टू स्लैब्स which we have studied category by category. Individuals are divided in 3 categories. We are clear about all the 3 categories. This tax is on your normal incomes. If you have salary, house property, PGBP, short term other than stock market, IFOS excluding casual earnings, तो ये स्लैब्स उस पे लगे. Your net taxable total income will be divided into normal incomes and special incomes. In CA intermediate, you are taught only 3. Short term, 4 actually. Short term stock market, long term stock market, long term all other than stock market. ये क्या है? तो कैन आई से 15% टैक्स फ्लैट, 10% आफ्टर 1 लाख, 20% इस पे वी विल अप्लाई स्लैब्स. योर टोटल इनकम विल बी सेग्रीगेटेड एंड इस पे वी विल अप्लाई स्लैब्स. इज दैट अंडरस्टूड? टोटल इनकम विल बी सेग्रीगेटेड एंड इस पे वी विल अप्लाई स्लैब्स. नॉर्मल इनकम विल बी टैक्स एट नॉर्मल रेट्स, स्पेशल इनकम विल बी टैक्स्ड एट स्पेशल रेट्स. इज दैट क्लियर? बोल ही देता, सुनता ना. एवरीवन इज क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस गुड न्यूज इज डेफिनेटली दैट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस पार्ट. तो समर लाइक सर दैट मीन्स अगर आई सेग्रीगेट एंड अप्लाई दिस तो बाकी के इनकम के ऊपर आई अप्लाई दिस. दैट मीन्स कैन आई से आई विल गेट टैक्स हियर एंड आई विल गेट टैक्स वॉट एवर इज द स्पेशल. आई विल एड द टू, तो दैट विल बिकम माई टोटल टैक्स. Normal rates on normal incomes, special rates on special incomes. At least I will have to add the two. वो दोनों को add करके भी the amount that you will get is called basic tax. What we have calculated till now is basic tax on normal income at normal rates, on special income at special rates. The total of the two will be called basic tax. And this basic tax is going to undergo some changes. This is not final tax. This is a typical कौन बनेगा करोड़पति एपिसोड. चेक पे साइन किया एंड बोला ये देखो, लेकिन ये चेक में देगा नहीं because this is not final. Imagine करो, supposingly there is an assessee who does not have special income. देखो, if there is special income, तो what we will do, is that clear? Segregate that special income, apply special rate, that tax we will add to our normal tax as per slabs, and that total will be our basic tax. Assume करो there is an assessee who does not have any special income, has only normal income. तो normal income पे what is the tax that we already have calculated? This, मतलब this amount or this amount is our normal tax. You, a chartered accountant, have calculated this 260 to 500 or 260 or 250 and told this to your client, and then you are saying लेकिन सुनो ये फाइनल नहीं है, ये चेंज होगा. तो गधेड़ा, what are those changes? Please teach me. We are at basic tax and we need to go to final tax. Basic tax has slabs and special rates. We need to compute final tax. सुनो, फिर इस final tax में से we take benefit of if any TDS is deducted, मतलब that is like a prepaid tax. Any advance tax we have paid,
But first we have to calculate this, then we will take those credits. अभी तक तो we have not reached final tax. We are only at our, and between basic tax and final tax, there are 3 concepts that you have to learn. Only if you learn these 3 concepts, you can say that I have knowledge about tax calculation. The tax that we have calculated using the slabs at normal rates, or using the special rate on special incomes, or adding the 2 amounts, because normal tax and special tax is the total, is not the final liability of the assessor. It will undergo changes. It will undergo, क्या बोला मित्रों? Changes. So what are those changes? Unless you know those changes, मतलब supposingly today I teach you a chapter and I say ये है आपका chapter, but in this calculation there is something that will change. So one day I have to tell you that change, no? So likewise we also have to learn 3 concepts one by one. Only then you can say that I know tax calculation. Slabs, you know. Slabs are easy. These concepts are also easy. Depends on who you learn it from. Concepts are also easy, but you need to know. तो एक एक करके करेंगे. First concept, the concept of rebate under section 87A. Whenever these garib, poor, bhikari words like rebate, relief, reduction, credit are used, this means कम होगा, कम, we will reduce. ये गधेड़ा क्या? Not 15 lakh. Nah. If you minus something from 15 lakh, that is possibly an exemption or a deduction. Income में से जो minus होता है, that is exemption. Not included only. Included and then minus तो deduction. But we are going to reduce your, let me be clear, tax liability. मतलब, let me specify, this minusing thing will not happen from income, it will be minus from, मतलब we are going to not minus from 15 lakhs, we will minus from 260 to 500. एक का एग्जांपल लेते हैं, whichever you are, minus from tax, your tax will be reduced. So rebate, relief, reduction, गरीब भिखारी words means we will reduce your tax. तो imagine करो, मी सी है, you client, तेरा tax is 260 to 500, लेकिन ये फाइनल नहीं है, ये कम होगा, तो you will say, अरे कम करके बताना. You need to know what is that thing called rebate, which is given in section 87A of income tax. Imagine CA client, me CA, you client, me, hi client, your tax will reduce. Whatever I have calculated here, it can be normal rate, it can be special rate, it will reduce. So you client, nacho. Let him, nacho. Dance karte karte, ask 2 questions. Imagine a CA telling his client that your tax will reduce. You dance! But while you dance, ask 2 questions, please. Ask. How? How or why is, almost one and the same. Ke, how will I get, why will I get, or who will get? Matlab, what are the conditions, if any, I have to fulfill? Does rebate is rebate given to everyone or someone selected? If it is given to everyone, so we would have subtracted it here itself. If we are putting it separately, matlab everyone is not eligible. Only certain assessees are eligible. So whether you ask how or you ask why, it is all meaning who will get, what are the conditions. Everyone does not get. And second, yes, some of you all said it. How much? Kitna kam? Then I can't use the same words as you now. Ego. हाँ, quantum. अरे यार, I thought मैं दूसरा कोई word लेता हूँ. Quantum. What? How much a deduction? You understand that B can be answered only after A. So let's understand who will get rebate. First, rebate will be given only to residents. Matlab, the moment you become non-resident,
you don't get senior citizen benefit, and you also don't get मजा आया? Second, plus means and means cumulative. वैसे we are learning tax rates only of, but soon after we have to go to HUF, company, firm, all of them. Whatever be their basic tax calculation, rebate not allowed, pakka not allowed, correct? Only individual. Third condition, plus means and means cumulative. Your net taxable total income, which coincidentally happens to be that income on which you have calculated your basic tax, and now you are checking for rebate. No, rebate will happen afterwards. Step 1 is going to be calculation of basic tax. Income will happen. Tax के अंदर step 1 will be basic. The income on which you have calculated tax. If you develop the habit of saying less than 5 lakhs, no? So you will always say less than 5 lakh, less than 5 lakh, less than 5 lakh, less than 5 lakh. It is not less than 5 lakh, it is not exceeding 5 lakh. Matlab it is less than or equal to 5 lakh, not more than 5 lakh. Income up to rupees 5 lakh. So be clear, at exact 5 lakh ka income level, am I eligible for getting rebate? Yes. So our 3 assesses for which we did calculation, that was 260 to 500, ekdam less than 5 lakh, so rebate. Reduction we will give from tax, but checking we are doing of income. What happens? देखो सबसे पहले तो people calculate income. Exam में क्या होता है? They get this. Once they get this, everyone is like, अरे मोदी जी, exam में आ गए मोदी जी. Then they calculate basic tax. Then they get this answer. Assume there is no special rate. Special rate होता तो segregate करते. Once they do this, 260 to 5. अरे 5 lakh से कम है. Rebate. NTTI should be up to 5 lakhs. Supposingly this is 15. If it was 5, तो 5 है, less than नहीं है. Equal to 5 lakh पे भी rebate is allowed. तो resident, individual, income up to 5 lakhs. गाना पड़ेगा. Resident, individual, one more time, then you will get rebate. So one thing we have decided, the 3 assesses for whom we have calculated are disqualified. A, वो resident individual है, 2 conditions are fulfilled, but 2 हो गया ना, 2 out of 3, 67%. Cumulative. शाबाश, तो they are disqualified. चलिए next question. Supposingly there is a resident with income of 4 lakh HUF. Resident HUF income 4 lakhs. So rebate? No. Okay. Individual income 4 lakh non-resident. Because cumulative. Correct है? चलिए. So first we have to decide eligibility, then we can give rebate. Correct or no? And once the assessee fulfills the condition, we first calculate basic tax. क्योंकि from that basic tax we are going to subtract and give rebate. What did we say? We will reduce tax, but for that first calculate tax. तो calculate basic tax, then check if rebate is available, तो give it. ठीक है? Now let me talk about myself. इंसान हूं. At home I don't get treatment like one, but I am a human being, at least in the eyes of income tax. Am I an individual? शक्ल देख के लगता है I have ever gone abroad. But 182 days हो गया तो रेसिडेंट. And when you have seen the शक्ल एकदम ध्यान से, so you have idea about the income. I am below basic exemption limit in reality, लेकिन example लो 4 lakh is my income. Annual income, summer like sir एक महीने नहीं, annual income. 4 lakh is my annual income. I am resident individual. First decide, am I eligible for rebate? Yes. But we don't calculate rebate first. First, what will you calculate? How will you calculate? मेरा है मतलब don't ask sir कौन सा category A, B, C. मेरी बात. तो calculate basic tax.
इसलिए बोलता हूं कैलकुलेट करो, क्योंकि एग्जाम में 5 + 3 = 8 और 9 यू आर गोइंग टू टैली इट. हाउ? फर्स्ट 250, बैलेंस 150 का 5%, 7,500 is my basic tax. Before this you don't do any analysis. Now decide, am I eligible for rebate? तो कितना क्वांटम, ये सेकेंड क्वेश्चन. My actual tax वो कितना है आपको, और ₹12,500 whichever is lower. तो in my example full zero हो जाएगा, नो टैक्स. 4 लाख पे नो टैक्स. चलिए, I'll continue my example by modifying it a bit. ठीक है, because I will cater to your doubts. I am resident, I am individual. This time my income is exact 5 lakhs. सबसे पहले we calculate basic tax. Before that don't talk to me. Exact 5 lakhs पे basic tax करो. बढ़िया, लर्न भी कर लिया. Now check, am I eligible for rebate? Resident हूँ, इंडिविजुअल हूँ, इक्वल टू 5 lakhs है बे, अलाउड है. तो एक्चुअल टैक्स और 12,500 whichever is lower. Effectively up to 5 lakh no tax. ये था पीयूष गोयल सर का गेम. फॉर दोज लर्निंग और लिसनिंग फ्रॉम इलिटरेट पीपल, 5 लाख तक इनकम टैक्स नहीं होता है. पागल, तेरे को पता नहीं है कि तू यू विल गो होम एंड से 2.5 लाख इज बेसिक एग्जाम्पशन. घर पे दे विल से नहीं 5 लाख इज बेसिक एग्जाम्पशन. टेल देम 5 lakhs इज नॉट बेसिक एग्जाम्पशन, इट इज बिकॉज ऑफ रिबेट. 5 लाख पे पीयूष गोयल सर क्या बोले पता है बजट में? क्लेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही सेड दैट विद द अमेंडमेंट दैट आई एम ब्रिंगिंग, people having income up to rupees 5 lakh will not be liable for any tax. वो सब उनको स्पेसिफाई थोड़ी करना, तुम देख लेना जाके. जैसे ही said people having income up to 5 lakh not liable to tax, पार्लियामेंट में दा टेबल. एंड न्यूज चैनल्स को तो ऐसा मतलब पागल हो गया न्यूज चैनल्स तो अब 5 लाख तक की आय पर आपको कोई कर नहीं देना होगा. तेरी नॉनसेंस. Basic exemption before that amendment was 250. During that amendment was 250. Today also is 250. 5 lakh is not basic exemption. You want to see what game was played? Ultimately, a rank holder chartered accountant announced this. If the income is 5 lakh and 10 rupees, तो 12,500 till 5 lakhs plus 2 रुपया. घर जाके चेक कर लेना how this 2 rupees came. अच्छा, how it came? तो व्हाट इज बेसिक टैक्स? रिबेट नहीं मिलेगा ना, रिबेट नहीं आएगा. बेसिक एग्जेम्पशन इज नॉट 5 lakhs. बेसिक एग्जेम्पशन इज नॉट 5 lakhs. कुछ समझा क्या? बेसिक एग्जेम्पशन yesterday, today and tomorrow 250. तो any person I face a lot of people. ए तू क्या बोलता है 250, अभी 5 लाख तक टैक्स नहीं. तो बोला 5 लाख 10 रुपए पे टैक्स करके दिखाते हैं. देन टॉक टू मी. आई विल नॉट टेक 5 लाख एंड 1 रुपया. प्लीज पे अटेंशन, क्योंकि इनकम टैक्स में देयर इज अ प्रिंसिपल बिफोर टैक्स रेट्स ओनली. लेट मी टेल यू दैट इनकम एंड टैक्स बोथ हैव टू बी टेकन टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10. इनकम एंड टैक्स बोथ हैव टू बी राउंडेड. अपने सब अमाउंट में 0,000 आ रहा है लास्ट में. They're already nearest 10. 5 lakh and 1 का इनकम है ना, तो कैलकुलेशन happens only on 5 lakh, nearest multiple of 10. तो वो 5 lakh के कैलकुलेशन तो 0 ही होएगा ना. तो 5 lakh 10 लेना पड़ता है to prove my point. I can't take 5 lakh 1 to prove my point. इसलिए I tell them 5 lakh and 10 rupees के ऊपर करके दिखाओ, then talk to me. Next time you face people who say कि 5 लाख बेसिक एग्जेम्पशन है, एक काम करना, you can also go to actually income tax website, there is tax calculator. You have to choose individual assessee है कौन है, assessment year now, तो you have to choose old regime, new regime also, senior citizen है क्या नहीं, etc etc. Enter the figure and show it to them. तो 5 lakh 9 होगा तो 5 lakh 10 पे टैक्स. हाँ, तो nearest multiple of 10. एक बात बताओ, कंसील 9 rupees. 9 rupees कंसील करने से you save 12,500. Is that clear? तो वो जो बट यू नो
सिंस द फर्स्ट डे व्हेन आई मस्ट हैव पहली बार टोल्ड यू कि 250 तक टैक्स नहीं लगता है, एंड तब से लगाकर आज तक देयर वर सम पीपल इन कांस्टेंट डाउट, सर नहीं हमने तो 5 लाख सुना है। अच्छा किया, यू हैव नॉट हर्ड ओनली फ्रॉम मी, भला। फाइनली आफ्टर टुडे व्हेन यू विल हियर पीपल सेइंग नो 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता है, तो व्हाट टू आंसर, दैट इज क्लियरली पुट इन फ्रंट ऑफ यू। एक तो आर यू क्लियर ऑन दिस ऑल ऑफ योर? चलिए फैंटास्टिक। एक तो ये बात था एक्चुअल टैक्स और 12,500 whichever is lower. अब इसका एग्जाम्पल्स आई विल टेक। ओके, एग्जाम्पल 1, द assessees for whom we have calculated at A, B and C, मतलब 260 to 500, 260 और वो उनका रिबेट 0 बाय 15 लाख का इनकम। ठीक है, सपोजिंगली assessees HUF, कंपनी, फर्म या नॉन रेसिडेंट, तो रिबेट विल बी 0। ठीक है, सपोजिंगली assessee is resident, individual and NTTI is 4 lakh, NTTI भी नील तो क्या कर रहा है फिर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट बेसिक टैक्स 7,500 एंड देयरफॉर व्हाट इज, माइनस करता है एक्चुअली रिबेट। एक्चुअल टैक्स इज हाउ मच, एंड 12,500 whichever is लोअर में, तो नील। नेक्स्ट एग्जांपल में वी डिड रेसिडेंट, ओरली ये सब किया हमने, एनटीटीआई 5 लाख, फर्स्ट स्टेप विल ऑलवेज बी बेसिक टैक्स 7,500, सॉरी 12,500 माइनस, विल दिस assessee गेट रिबेट? अरे इक्वल टू 5 लाख है, चलता है, तो व्हाट इज रिबेट? एक्चुअल टैक्स इज 12,500, मैक्सिमम लिमिट इज, तो आंसर इज बाय डिफॉल्ट 12,500, तो 0। ठीक है, रेजिडेंट, इंडिविजुअल एन एनटीटीआई ऑफ 5 लाख एंड 10 रुपीज। स्टेप 1 विल स्टिल बी बेसिक, इसके पहले डोंट डू एनी एनालिसिस। 12,502 माइनस रिबेट कितना, एंड दिस इज व्हाट वी हैव ऑल डिस्कस्ड। बेसिक एग्जेम्पशन वाज ऑलवेज 250, खाली रिबेट की वजह से 5 लाख पे बिकम 0 ओनली एट एग्जैक्ट 5 लाख, नॉट एट ग्रेटर देन 5 लाख। ठीक है, अब मेरे पास एक डाउट है, एंड द डाउट इज, लिसन सर, ये लोग पागल है क्या? वाई दे नीड टू राइट दिस? जस्ट राइट दिस, क्योंकि 4 लाख पे एक्चुअल टैक्स 7,500 इज ओनली रिबेट, 5 लाख पे एक्चुअल, अच्छा 5 लाख पे हाईएस्ट यू गेट 12,500 which also is your rebate का threshold, and below that तो anything, मतलब if we just write actual tax तो 0 to 12,500 ही होएगा ना? You understood? I would have now answered that by taking this example. Supposingly I am a resident. अच्छा, resident individual, now you assume यार, अभी हर एक बार में क्या है, ये बार बार resident, it is resident individual and 5 lakh. Okay, I have got salary of 3 lakhs and I have got LTCG of house 2 lakhs. So what's my entity? 5 lakh. First step is basic tax. तो करो 5 लाख पे स्लैब्स, नहीं लॉन्ग टर्म पे अलग। चलो यहां तक तो यू आर राइट। ओके, 3 लाख पे वी विल कैलकुलेट एट स्लैब्स। 2 लाख, दिस इज विच लॉन्ग टर्म? हाउस 112, तो व्हाट रेट? 10% विदाउट इंडेक्सेशन भी कर सकते, तो 20%। कैन आई से दिस प्लस दिस विल बी माई बेसिक टैक्स? अभी तक तो बेसिक है, रिबेट का चर्चा वी विल डू बेसिक टैक्स। यहां पे 40,000, यहां पे कितना? स्लैब्स लगाना है 3 लाख के ऊपर, 50,000 के ऊपर 5%, 2,500, 42,500 माइनस रिबेट। फर्स्ट क्वेश्चन, इज दिस assessee एलिजिबल? रेसिडेंट है, इंडिविजुअल, 5 लाख इक्वल टू अलाउड। अब बताओ एक्चुअल टैक्स,
That means we have identified a case where actual tax can be higher than 12,500. Also, even if income is up to 5 lakh, which is possible if there is, bol, tu bol. I am proud of you, bol. If there is income taxable at special rates. If there is income taxable at special rates. आप समझा क्या? Means impossible नहीं. Is that clear? So, legally speaking, 3 conditions बोलना पड़ेगा आपको. Resident, individual, equal to or less than 5 lakhs, not more than 5 lakhs. Correct? And how much rebate? Actual tax or 12,500, whichever is lower. Is this absolutely clear? Okay. लेकिन I want you to note, before I go to, I told you, there are 3 concepts that I will teach you. ये first concept है. I have to teach you 2 more concepts ऐसे ही. तब आपका basic tax, देखो, आप समझ रहे हो? That यहाँ पे basic tax was 7,500 but it became 0. This became 0. But this did not become 0. This became 30,000 after taking rebate. एक concept हुआ, ऐसा 2 more concepts are there. We will do those 2. But right now I need to tell you 2 points. Noteworthy points. Important है, अभी आपको पता हो इसके बारे में. First, if there is any tax that is calculated under section 112A, क्या है ये? Long term stock market. And how we calculate tax? Actually आप ही right हो. I was trying to keep it simple. तो against this tax you won't get any rebate. जैसे did you observe यहां पे we calculate 112 का tax. You understand? Normal tax was 2,500 and 40 was 112 का tax. तो भी we gave rebate, no, minus इसमें से and इसमें से total में से भी minus, no. That means my question is only this much. क्या special tax के सामने we have given rebate? Yes, because it was 112. Had this been 112A, तो rebate नहीं मिलता. Example लेते हैं. Salary 3 lakh. ठीक है. Long term stock market 2 lakh. Can I say this will be slabs? This will be 112A. तो करो. 3 lakh के ऊपर at slabs, what do you get? 3 lakh के ऊपर slabs, we get 2,500. And 2 lakh के ऊपर how will you calculate? We will calculate 1 lakh का 10%. तो 10,000 rupees. Correct or no? Can I say basic tax? वैसे तो our answer is coming to 12,500. Is everyone with me? Now please focus. Is the assessee resident individual? Yes. Income equal to 5 lakh? Eligible for rebate? Yes. Normally your calculation is this or 12,500, whichever is lower. If we go by what we did here, तो answer here will be rebate of 12,500. But सुनो, rebate I will get only from this figure. इसमें से there will be no rebate. Effectively the rebate will be only 2,500 and 10,500 is payable. अब देखो what point I have written. Whatever tax you calculate under 112A, is this tax under 112A? उसके सामने you won't get any rebate. Other tax के सामने ले लो. But against this tax, no rebate. ये provision. All your friends will know this. Then how are you better than them? तो आप बताओगे कि मैं बताऊं? You have already saved 10,000 rupees. 1 लाख पे टैक्स नहीं लिया ना? If we would have taxed the full 2 lakh, imagine करो, इनकम तुम्हारा 5 है, but tax we are taking only on 4 if you think about it. मतलब already indirectly 1 lakh exempt कर दिया. You can't call it exempt income, क्योंकि computation में you will have to write full 5 lakhs.
टैक्स करने के टाइम पे जाके चेक करना 112A में वी रोट दिस इन इनकम फुल इन टैक्स एक्सेस डिड वी। तो मित्रों अगेंस्ट दिस 1 लाख यू ऑलरेडी टेकन 10,000 का टैक्स बेनिफिट, तो वापस रिबेट नहीं मिलेगा। यू अंडरस्टूड द लॉजिक, द आइडिया ऑफ द पॉइंट। हाँ, so you should know the logic. I have got full respect for all your friends and their teachers, but you should still be better than everyone else. And if others are good, we have to be better. If I have to call myself the best, I have to first make you the best. तुम समझा क्या? खाली बोल बड़ी बड़ी बातें करने जाना, 4 दिन बाद एक क्वेश्चन फेंक के मारेगा, रोएगा। सेकेंड पॉइंट, एवरीवन विल सिंग विथ मी, एवरीवन। मैं पहले गा के सुनाता है, डेमो देता है, देन यू विल जॉइन मी। 2 people 3 incomes, 2 people 3 incomes, 2 people 3 incomes, 2 people 3 incomes, 2 people 3 incomes। 1 2 3 स्टार्ट। जब तक मैं बोलूं नहीं स्टॉप, तब तक लाउड वॉल्यूम में चालू रखना। क्या? स्पीड शुड बी लाइक मी। 2 people 3 incomes, 2 people 3 incomes, 1 2 3। आई वॉन्ट टू हियर एवरीवन लाउड, स्टार्ट। I didn't tell you to stop. You keep it going, please. Now tell me, who are the 2 people? And what are the 3 incomes? 111A is which income? Short term stock market. 112 is long term other than stock market. 112A is you are allowed to utilize unexhausted basic exemption limit. You will be allowed to utilize your unexhausted basic exemption limit. Understand? Supposingly there is a person who has got only one income, long term capital gain on house, 8 lakh rupees. अब यहां पे तो there is no rebate. Rebate का टॉपिक इज ओवर. Rebate आने के लिए this should have been 5 lakh or less. Now tell me, long term on house falls in which of the 3 sections? Normally if I don't teach you this point here, so you would have taxed 8 lakh rupees at what rate? क्योंकि वही रेट है 112 का. But this assessee does not have any other income. That means this assessee has not utilized his basic exemption of how much? देखो, unless specified assessee is resident and unless specified he is category A. तो category B and C होगा तो specify होगा and non resident होगा तो specify होगा. करेक्ट है? तो what is basic exemption? तो मित्रों ये लेके what do we call it? Unexhausted basic exemption limit, and only 5.5 will be taxed at 20%. थोड़ा और एग्जांपल्स करते, देन वी विल कम बैक. ओके, सपोजिंगली यू हैव गॉट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन हाउस 7 lakh rupees and you have salary income 1 lakh rupees. Possible? 8 lakh पे we have to calculate tax. तो करो slabs. 1 lakh will be at slabs and balance is ये 112 20% हाउस है ना. इसके लिए मेरी बात सुनो. आई हैव यूटिलाइज बेसिक एग्जेम्पशन ओनली ऑफ 1 lakh. आई स्टिल हैव अनएग्जॉस्टेड लेना. हियर आई हैड नॉट टेकन एनीथिंग. बेसिक एग्जेम्पशन वी आर टेकिंग अगेंस्ट 3 इनकम्स बट अनएग्जॉस्टेड. सपोजिंगली सैलरी वॉज ओनली 3 lakh, तो ये एडजस्टमेंट होता ही नहीं. समझे? तो फर्स्ट बेसिक एग्जेम्पशन विल गो इन नॉर्मल इनकम. बच गया, ब्रिंग इट हियर. तो दिस टाइम हाउ मच वी विल एडजस्ट. मतलब इट इज लाइक इट इज एज गुड एज यहां से 1.5 आई एम सेंडिंग हियर एंड मेकिंग द टैक्स 0 और यहां पे 1.5 माइनस करके 5.5 पे वी विल अप्लाई 20%. इज दैट अंडरस्टूड? बट नाउ प्रोविजन के बारे में क्लियर हो जाओ. दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल ओनली टू रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट एचयूए. मतलब कंपनी फर्म को बेसिक एग्जेम्पशन ही नहीं मिलता. दैट आई विल टॉक अबाउट इट व्हेन आई कम टू दैट.
but more importantly, if the assessee is non-resident. 1. Higher basic exemption of senior citizen, not allowed. 2. Rebate, not allowed. 3. Unexhausted basic exemption limit, also not allowed. I have more for you. Third example. Salary 1 lakh. ठीक है. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है. देखो अदर देन 111 है तो खुद ही स्लैब्स में जाता है. तो 111 है स्पेशल रेट में 2 लाख रुपीज. एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ हाउस, तो प्लीज टेल मी विच सेक्शन? 3 लाख रुपीज. व्हाट्स द एंटिटी? मित्रों अगर एग्जैक्ट 5 लाख होता तो रिबेट भी देते. रिबेट का करंटली वी आर नॉट हैविंग डिस्कशन. I am having discussion of something else. Rebate is over. Resident individual income up to 5 lakh. Actual tax or 12,500, whichever is lower, but not allowed against 112A का tax. और उसका logic also you know. ये सुनो 6 lakh. Will we calculate slabs on this? नहीं. Will make parts. कितना parts? 1 part, 2 part, 3. 1 part है तो डायरेक्ट ही करना था ना. 2 तो मिनिमम. But answer actual is क्योंकि there are 2 special rates income. तो सुनो 1 lakh will be taxed at slabs. 2 lakh will be taxed at 111A का 15% and 3 lakh will be taxed at 112 का 20. I have got unexhausted basic exemption of how much? Unexhausted लेने का रहता है मित्रों, not total 250. Unexhausted कितना है वो? मतलब I have to bring 1.5 and finish this 2.5. I am resident individual, मतलब 2 people fulfilled. I can take it against 3 incomes. Are both these incomes from those 3? किस में से लोगे? Why? Higher tax rate. Between these 3 you can take whichever you want. Correct? So we will adjust from this. And इसमें से ही पूरा निकालने के लिए enough है ना? So this will be fully taxed at 15% and this will be 1.5 taxed at 20%. Understood why we took from here? 2 people, 3 incomes. So when we had, देखो here we had only 1, so we took against this. Here we had only 1, so we took against this. But when we have 2, तो कौन से के सामने we will take? Higher one. Is that understood? देखता हूँ कितना. Salary 1 lakh. ठीक है. Long term capital gain on house 2 lakh. 112 मित्रों. कैजुअल विनिंग्स 3 lakhs. कैजुअल विनिंग स्लैब्स पे ओके. 6 lakh पे विल बी कैलकुलेट स्लैब्स. बोला सर अभी तो ज्यादा हो रहा है. नहीं. हाउ मेनी पार्ट्स? 1 lakh टैक्स एट स्लैब्स. 2 lakh अंडर 112. 3 lakh under 115 dB. Okay. We have to utilize 1.5 and complete this. This is 20%. This is 30%. ये लगाना नहीं है, पहले यूटिलाइज करना ना. यहां पे प्रीवियस वाले में भी स्टडीड क्या हायर रेट में से लेना रहता है, तो किस में से वी विल टेक? अमाउंट देखा ना 2 lakh एंड 3 lakh है. 1 मिनट 1.5 सब में अवेलेबल है. अभी बोल. बिकॉज 2 people 3 incomes. संगीत क्लास इज नॉट वाई वी ट्राई टू अंडरस्टैंड. कैजुअल विनिंग्स दो एट हायर रेट बट डायरेक्ट 30 लगेगा मित्रों. द 1.5 हैज टू बी एडजस्टेड फ्रॉम दिस ओनली. Is that understood? Because भले कैजुअल विनिंग्स इज हायर बट इधर आओ अभी 2 people 3 incomes. Understood? So we can utilize our unexhausted basic exemption limit. With this, ladies and gentlemen, we are done with basic tax at normal rates and special rates under the old regime, and we are done with rebate under the old regime. Okay? ओल्ड रेजिम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. ओल्ड रेजिम चलेगा अब थोड़ा टाइम तक तो चलेगा, क्योंकि ओल्ड रेजिम के अंदर वी स्टिल हैव 2 कॉन्सेप्ट्स रिमेनिंग. विच 2 कॉन्सेप्ट्स?
One हुआ है, total 3 concepts. 2 more concepts. There is a concept called surcharge and there is a concept called cess. We'll talk about them now. But are we clear? सबसे पहले we will do what? Basic tax. If everything is normal income तो direct slabs. If there are some special income तो segregate. Tax as per normal, tax as per special is the total basic tax. If the assessee is eligible for rebate तो minus it. What are the 3 conditions to get rebate? Equal to is also covered. What is the quantum of rebate? But 5 lakh तक तो it is always 12,500 only. नहीं, special rate की वजह से it can be more. We can take, but not against 112A का tax. And then 2 people 3 incomes can utilize unexhausted basic tax. Unexhausted. ऐसा नहीं कि सैलरी है तो भी पहले उधर ले लो. Unexhausted. सैलरी को 5 में डाल देंगे. इमेजिन करो दिस assessee, ठीक है, बोलता है एक काम करता हूं, मैं पूरा 250 यहां से ले लेता हूं and this I will put in 5% rate. नहीं, your basic exemption will be first by your normal income. Then if there is left anything, so from those 3 incomes. Is that clear? Second concept in tax calculation, गरीबों का concept over, तो अमीरों का concept. किसी को if you want to give दुआ, तो भगवान तुझे surcharge लगाए. What is a surcharge? It is increase in tax for super rich. I'll define super rich. Chill करो. Super rich. क्या होता है super rich? We will talk about it. We will talk about it. वो होली के दिन नया व्हाइट कुर्ता पजामा पहनता है वो नहीं, वो सिर्फ बॉलीवुड के लिए. What is super rich? We will define super rich. Don't worry. But one thing please understand. When you are poor, we reduce your tax by giving you rebate. When you are rich, income tax behaving like Robin Hood. गरीब का टैक्स कम करो, अमीर का टैक्स इंक्रीज करो. For rich people, there will be extra tax. तो याद रहे, rebate was reducing tax. Surcharge is going to increase your tax. Correct? Rebate का 3 conditions याद करो पहले please. 3 conditions. And quantum? Surcharge के लिए there is only one criteria. Your NTTI is exceeding a threshold that we have given. So you will be liable for surcharge. मतलब rebate के लिए you had to be a resident. Non-resident will not have rebate. But surcharge will come. क्योंकि only ऐसा बोला है, income इतना क्रॉस हुआ तो surcharge. Rebate will not come for HUF company firm. Only individual. यहां पे खाली इतना बोला है, NTTI more than this limit. मतलब रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, इंडिविजुअल, HUF, AOP. अच्छा, बाय द वे वी आर राइट नाउ लर्निंग इंडिविजुअल का सरचार्ज. सरचार्ज विल कम फॉर ऑल असेसीज. रेट्स आर डिफरेंट. कंपनी का सरचार्ज रेट्स आर डिफरेंट, फर्म का सरचार्ज रेट्स आर डिफरेंट. क्वेश्चन ये है, विल इट कम फॉर एवरीवन? यस. रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट एवरीवन? यस. मतलब रिबेट के लिए 3 कंडीशंस, सरचार्ज के लिए 1 कंडीशन. NTTI क्रॉसिंग ₹50 lakh, तो वी विल लेवी 10% सरचार्ज. Now this, whether you are individual or HUF, everyone will have surcharge. Rates may be different, but everyone will have surcharge. एक काम करते, we'll talk about individual only, क्योंकि right now whose tax rates we are learning? Confined to individual. Rebate चाहिए तो which individual only? Resident individual. Surcharge will be applicable to. चाहिए तो मैं specify करता हूं. They have not spoken anything. Rebate में they are giving you benefit, तो more and more conditions. Surcharge में they are getting something. एक ही condition, 10%. तो have we already identified some differences? 1. Rebate is only for individual assessee. Surcharge is for all assessees. दूसरे का rates we will do later. Rebate is only for resident. Surcharge is for all. Identify the third difference. वो तो obvious है बाबू. और कुछ क्लिक होता है? Rebate will reduce, surcharge will increase. वो तो by definition है. Hidden point, अंदर का hidden point. Rebate is increasing the income. तो क्या बोलता है? पहले एक बार खुद को बोलता है,
तूने क्या बोला? आई विल रिपीट योर वर्ड्स. रिबेट इज इंक्रीजिंग द इनकम. स्पीक दैट टू योर सेल्फ वंस. रिबेट इज इंक्रीजिंग इनकम. रिबेट इज रिड्यूसिंग टैक्स. तूने बोला रिबेट इज इंक्रीज. एक बार खुद को बोला नहीं, सॉरी. नेक्स्ट, एनीवन? दैट इज गिवन इन रुपीस, दिस इज गिवन इन परसेंटेज. तो वहां पे यू हैड टू लर्न 12,500. यहां पे इफ इट इज गिवन इन परसेंटेज तो फिर एक और क्वेश्चन होएगा, ऑन व्हाट. वो आंसर करना बाकी है. हाउ कैन यू आंसर? आई विल आंसर. Supposingly income is 80 lakhs. Surcharge will come because I have crossed the threshold at 10%. But 80 lakhs पे आएगा क्या? किस पे आएगा? I have crossed the threshold by 30 lakhs. तो 30 lakhs पे आएगा कि 80 lakhs? किस पे आएगा? That I will answer. But yes, you have identified के percentage में है तो on what? वो भी एक आंसर है. But there is one more difference which I wanted you to identify. Actually too much to expect from inter-student. मैं बोलता हूं. Okay. When the income is exact 5 lakhs तो रिबेट कितना नहीं पूछा, रिबेट है कि नहीं उतना ही. When the income is exact 50 lakhs, exact 50 lakh पे no surcharge, but exact 5 lakh पे yes रिबेट. समझा? 50 lakh पे how much surcharge? 10%. Now surcharge will contain. ये डिफरेंसेस आई हैड टू आइडेंटिफाई फॉर यू, बट अभी खत्म नहीं हुआ है. सपोजिंगली इनकम इज मोर देन 1 करोड़ तो सरचार्ज का रेट चेंज हो जाएगा. दिस इज नॉट स्लैब. सुनो, ऐसा नहीं है कि 0 to 50 lakh 0% सरचार्ज, 50 lakh to 1 करोड़ 10%. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. इफ इनकम इज 40 lakhs नो सरचार्ज, 80 lakhs तो 10%, 1.5 करोड़ तो 15%. एक ही रेट है सरचार्ज का, एक ही रेट है. दैट विल डिपेंड ऑन वेयर योर टोटल इनकम इज फॉलिंग. इज दैट क्लियर? स्लैब्स नहीं है. दिस इज नॉट टैक्स, दिस इज नॉट स्लैब्स. वन रेट ऑफ सरचार्ज. विच वन? 0 to 50 lakhs नथिंग. मोर देन 57 करोड़ 10%. मोर देन 1 करोड़ तो 15. मोर देन 2 करोड़ हुआ तो 25%. मोर देन 5 करोड़ हुआ 37%. एक थाम ना रे बाबा, मैम लेट मी कंप्लीट नो फर्स्ट. सरचार्ज इज नॉट गोइंग टू गेट ओवर टुडे एंड टुमारो आल्सो. टुमारो इट विल गेट ओवर. मतलब बहुत कुछ है अभी. बट आई स्टार्ट बाय द फॉलोइंग. रिबेट विल रिड्यूस टैक्स, सरचार्ज विल इंक्रीज टैक्स. रिबेट एंड सरचार्ज कैन नेवर 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 coexist in mathematical statistical language. They are mutually exclusive events. How? Rebate is up to 5 lakh, surcharge is after 50 lakh, and income can, there is no figure in maths which is less than 5 lakh but more than 50 lakhs. They can never coexist. So for an assessee, there can be rebate for 0 to 5 lakh. There can be surcharge if it is more than 50 lakhs. There can be none of them, 5 lakh to 50 lakhs. But there can never be both of them. Our options are rebate, surcharge, ke none of them. Rebate, surcharge, ke none of them. Is that clear? Next, rebate will apply only to resident individuals. Surcharge will apply to all assessees. Next, rebate is given in rupees. So you have to learn 12,500. Surcharge is given in percentage. तो अभी लिखना बाकी है. This, whatever it is. This will be on what? Surcharge के लिए there is only one rate at a time that will apply. It is not a slab. So income is 80 lakhs 10%, 1.5 crore 15, 2.5 crore 25, 5.5 crore 37. Total में there will be only one rate. Okay. And one very important difference, equal to 5 lakh के ऊपर rebate, लेकिन equal to 50 पे surcharge. Is that clear to everyone? पक्का? अच्छा, वाह. तो इक्वल टू 50 लाख पे हाउ मच सरचार्ज? नहीं. लाइकवाइज इक्वल टू 1 करोड़ पे 10%. इक्वल टू 2 करोड़ 20%. इक्वल टू 5 करोड़. समझा? दिस इज समथिंग दैट वाज हिडन.
मतलब 0 to 50 lakhs nil, more than 50 to exact 1 crore, more than 1 to exact 2, more than 2 to exact 5, more than 5 to infinite. At one time only one will apply. Slabs nahi hai. Is that clear? Now on what? Supposingly income is 80 lakhs. And now you can decide. 10%? 1.5 crore? Acha, 1 crore? 1.5 crore? 2 crore? 2.5? 3 crore? 4 crore? 5 crore? 5.5? ये किस पे लगेगा? Some people think sir 80 लाख का इनकम नो, टैक्स तो इनकम पे होता है ना सर, तो 10%, 10% इज राइट, बट ऑन 80 lakhs. दूसरा दोस्त बोलता है नो 50 तक तो आता ही नहीं ना, इट इज कमिंग बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा 30 नो, तो 30. I don't know what you have as knowledge. It is better to not have any knowledge क्योंकि first time you are being taught. It will be always on, not on income. Surcharge is calculated as an addition in your income tax which is already calculated. मतलब step 1 will always be basic tax. Then we check rebate, then we check surcharge. It may be none of them, but it can never be both of them. Is that clear? छोटा एक example लेना पड़ेगा. Supposingly NTTI of an assessee is 1.5 crore. So now that it is a case of surcharge, you have the brain to understand resident, non-resident doesn't matter. In fact, all assessees will have surcharge, but right now we are talking about individual क्योंकि others का rates are different. अगर orally बोलना है ना तो company and firm पे surcharge starts after 1 crore. 50 lakhs के बाद कुछ आता ही नहीं. Okay, surcharge will come, but different income levels, different rates. If the question is will it come, yes it will come. ठीक है, 1.5 crore. Answer what I am asking. Rebate, surcharge के none of them. I have made conscious effort to not give in option both of them. Surcharge. कितना वाला surcharge? At one time only one of them can apply. They cannot come together. 15 क्योंकि you are falling in this. But किसके ऊपर? तो first you will have to calculate. रुक. You don't calculate. Tell me how you will calculate. 1 crore 50 lakh minus 10 lakh. 1 crore 40 will apply 30%. Continue. Plus 1 lakh 12,500. कभी कभी सिक्सर मारता है तो करो. समझा? नहीं समझा तो टेक 250 0% 0, 250 5% 12,500. Unless age is specified, it has to be category A. Ladies and gentlemen, on this 43 lakh 12,500, we will add surcharge at I am not interested in the amount that you are getting. I am not interested in the amount. I am interested in making you understand कि ये 15 जो है वो किस पे, on what? On basic tax. I am interested in you knowing this. किस पे आएगा? Sir, basic tax. Is that clear? क्योंकि surcharge का जो concept है, it's big. Okay? Under the concept of surcharge, there are two things that I have to teach you. Okay? I can do them in any order. जैसे rebate के अंदर भी 2 points लिखवा है ना, not allowed against 112 है, and then unexhausted basic exemption वाला point, 2 people 3 incomes. तो in principle, what is surcharge? For all assessees, when income crosses a certain level, and these are the rates on basic tax, and equal to पे surcharge will come of the lower level. मतलब equal to 1 crore पे 50 वाला, equal to 2 crore पे 1 crore वाला. लेकिन there are two things that I need to teach you. उसमें मैं पहला वाला concept I have enough time I can complete. The second one is a little complicated. Either you come at 1 o'clock tomorrow or you come at 2 o'clock tomorrow क्योंकि you miss 5 minutes मतलब तुम गया काम से. ठीक है? Marginal relief. Example लो. Supposingly there is a person जिसका NTTI is 1 crore 5,000. करके दिखाओ, लिख के दिखाओ 1 crore 5,000. पेपर पे लिख के दिखाओ, पेपर पेंसिल में लिख लो क्योंकि कैंसलेशन होगा. 1 crore 5,000. राइट इट. 1,000 ऐसे नहीं बोला जाता है. मोबाइल नंबर है, 1 से कोई मोबाइल नंबर चालू नहीं होता. विदाउट कैंसलेशन. कंफर्टेबल? हाँ बोल दो. 1,000 5,000. बहुत अच्छे.
ओके, देयर इज दिस एसएससी जिसके लिए वी आर कैलकुलेटिंग टैक्स. साथ में इसके साथ कंपेयर करने के लिए आई ऑल्सो हैव अनदर एसएससी जिसका इनकम इज एग्जैक्ट 1 crore. आई एम डूइंग विथ यू 2 एसएससी. वन एसएससी 1 crore 5,000 एंड सेकेंड एसएससी 1 crore. डिसाइड करेंगे फॉर बोथ दीज एसएससीज. रिबेट सरचार्ज के नन ऑफ देम. सरचार्ज. दिस एसएससी विच सरचार्ज? 10%. क्यू. Up to 1 crore. दिस एसएससी. 50%. चलिए, you all are right. But will we calculate that first? No. नहीं. First we'll calculate basic tax. Second वाले एसएससी का थोड़ा सा easy है. Tell me फटाफट. 30% of 90 lakhs. Plus 1 lakh 5. So that's 28,500. correct है. First वाले एसएससी का you are going to calculate 30% of 90 lakh 5,000. Simple है. 1 crore 5,000 minus 10 lakhs करने का into 30% plus 1 lakh 500. 28 lakh. what is this difference? 1,500. I show you some magic. Answer what I'm asking. How much is the difference in income? 5,000. That 5,000 will get taxed in which bracket? 15%. मतलब बेसिक टैक्स कौन से रेट पे लगा है? 30%. भाई 30, क्योंकि 10 lakh is crossed. No. Now after 10 lakh every rupee goes in. देखो, इसका एग्जैक्ट 1 crore, इसका 5,000 एक्स्ट्रा, so that extra 5,000 got taxed at a rate of, because that's the bracket in which he is falling. 30% कितना होता है? 1,000. Can I say that reflected here? Yes, sir. करेक्ट है. लेकिन आगे का ट्विस्ट, एड सरचार्ज. कैन आई से ईयर 15%, ईयर 10%. तो दिस सी आई एम सो फास्ट इन कैलकुलेशन. मैंने तो इतना फटाफट कर लिया. हंसो मत. बाल काला से सफेद. अब आता है कॉन्सेप्ट. यू आर ए, आई एम बी. You A, I B. How much you have earned more than me? 5,000. The difference in income is? How much is your tax more than me? 1,500. Difference in income? 5,000. Difference in tax? 1,42. Imagine the situation of the assessee A. If he would have earned only 5,000 less, so this would have been his tax. Only because he has earned 5,000 more, this is his tax. मतलब excess of income 5,000, excess of tax. ये बोलता है सर एक काम करो, full 5,000 you keep. This is not funny, क्योंकि गवर्नमेंट सेड ठीक है दे दे. गवर्नमेंट सेड ठीक है दे दे. ये क्या बोला? मजाक में बोला. सर आई हैव अर्न्ड मोर देन बी. हाउ मच? 5,000. एंड यू आर टेकिंग कितना टैक्स? एक्स्ट्रा की पूछ रहा हूं. सर चाहिए तो यू की फुल 5,000. दैट्स नॉट फनी बिकॉज दे डिसाइडेड इट लाइक दैट. दे सेड दैट ड्यू टू 5,000 का डिफरेंस इन इनकम, दिस कैन नॉट बी डिफरेंस इन टैक्स. व्हाट कैन बी मैक्सिमम डिफरेंस? 5,000. तो एक काम करो, इसका टैक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें एड 5,000, 30, 98, 750. Can I say he offered take full 5 and we are actually taking 5,000 more in comparison with B? That means from this column we are minusing some amount. देखो ये तो आ गया था, but we have to keep only this much. So what are we minusing? 137,350. Whenever your income just marginally exceeds the third surcharge का criteria, it is likely that the difference in tax is exceeding the difference in income. सरचार्ज के कॉन्सेप्ट पे, मार्जिनल रिलीफ के कॉन्सेप्ट पे आई कैन टॉक फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स. लेकिन कभी कभी एक लाइन काफी होती है बनी. वन लाइन. द डिफरेंस इन टैक्स कैनॉट बी मोर देन द डिफरेंस इन इनकम. चाहिए तो रिकॉर्ड कर लो. कितना भी बोल दो, दिस लाइन विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. टैक्स का डिफरेंस
cannot be more than 5,000. If it is coming to more than 5,000, remove that difference. Keep the difference of maximum 5,000 दोनों के बीच का. तो whatever is the difference, you eliminate, and that will be called marginal relief. Understood this part of surcharge? Surcharge is not over. इसमें 2 point और है. फिर cess will get over, no? तो इंडिविजुअल का ओल्ड रेजिम ओवर, वैसे ही अदर असेसिस का ओल्ड रेजिम, फिर सबका न्यू रेजिम, दैट इज वेयर टैक्स रेट्स विल गेट ओवर. बट सबसे मेजर पार्ट इज दिस, इफ दिस गेट्स ओवर, नो, तो एवरीथिंग एल्स विल गेट ओवर वेरी फास्ट. टुमारो टैक्स रेट्स विल ऑल्सो गेट ओवर, एंड रिलीफ का चैप्टर इज तो 15-20 मिनट्स का चैप्टर, बोथ विल गेट ओवर. एम आई क्लियर ऑन दैट? तो सुनो, क्लियर कट कंडीशन है. तुम ब्लाइंड स्पेक्टेटर की तरह अगर बैठा ना मेरे सामने, I am not going to tolerate. To help with your college exams, you have to study this first. Okay? I am going to ask you questions on slabs, surcharge. We are going to solve questions on them. So you have to answer questions of what we have done. Surcharge is still not over, but we are going to continue this part tomorrow. Whatever I have done in tax rates, you need to be clear about them. Absolutely clear, everyone? I'll see you guys tomorrow, please.